फरूख साहब, वॉल्यूम्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं आज हमने, और कुछ सीमेंट में स्पेशली लकी और डीजी में अच्छी मूवमेंट देखी है, लेकिन इंडेक्स में सिर्फ 12 पॉइंट्स का इजाफा नजर आया है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं थी? I think मार्केट वापस ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है, एंड I think it probably is not a surprise that the market is taking a little bit of a time to get used to these levels and sort of digest these levels. और उसके साथ साथ obviously day to day there are political developments taking place. The market and investors also waiting for the economic plan that the government will announce and the policy directions that will come out. It's been coming out in different statements, but as the finance minister has also said, they will present a consolidated plan moving forward. So that will be important. And as all the provincial assemblies provincial governments also come into existence. So I think, but overall, I think the market is very well positioned. There are economic challenges that will have to be faced. Some of them particular to Pakistan, a lot of them common to most developing countries with the oil price and the slowdown in US and Europe. But I think overall जो market के sectors हैं, खासतौर पर cement को देखा आपने, fertilizer, oil and gas, the major sectors for our market are I think well positioned to continue showing growth. फरूख, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो मार्च के महीने में जैसा हमने कहा कि AC 100 इंडेक्स को 15,125 के लेवल्स पर भी आते देखा, और जहां पे फेब में हाईएस्ट लेवल 14,934 का टच किया गया था, यानी मार्च के महीने में हमने ज़्यादा बेहतर मार्केट की परफॉर्मेंस देखी। अब जैसे कि अप्रैल शुरू हो चुका है और अप्रैल का आगाज़ तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव और उससे भी बेहतर हो रहा है। गोइंग फॉरवर्ड, जैसे कि आपने इस वक्त मैंशन किया कि मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, बजट भी आ रहा है, और पॉलिटिकल फ्रंट पे जैसे कि इस वक्त अभी पॉलिसीज़ नई गवर्नमेंट आई है वो भी सेट करेगी, तो उसको सामने रखते हुए आप क्या समझते हैं कि मार्केट की मूवमेंट आने वाले दिनों में किस तरह हो सकती है? What do you expect? I think market की movement, as said, we are our stance is positive on the market. We have a target of 17,000 approximately for target for the index on the market. Not that we expect that's the fair value today, but that is what we expect over the next few months. And over the next few days I think we'll continue to see positive momentum, but yes, the market is at high level, so we could see retracements also, but that is part of normal market movement, but overall the direction we see as positive. ओके, और आज की अगर बात करें फरूख साहब, तो जो हमने जैसे आपने मेंशन किया कि सीमेंट्स में हमने अच्छा ट्रेंड देखा, सीमेंट में टुवर्ड्स वेरी एंड हमने एकदम से जो है इसमें वॉल्यूम्स बढ़ते हुए देखे और प्राइस में इंक्रीज आए, तो कोई चीज़ अब तक सामने आई है मार्केट में? क्या बात हुई? कोई रीज़न था, कोई अनाउंसमेंट या कोई ऐसी न्यूज़ का इन्फ्लो था? सीमेंट के डिस्पैचेस के नंबर्स वगैरह हैं, दोज आर वेरी पॉजिटिव. द कंपनीज हैव आल्सो मेड वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. बट डिस्पैचेस की फिगर्स तो फरूख साहब हमने परसों आते हुए देखी थी, तो वाई आज एकदम से क्यों रिएक्शन है? कल भी हमने देखा था लकी में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई थी, तो डिस्पैचेस की फिगर्स को अगर देखना था तो कल क्यों रैली नहीं देखी हमने, या परसों क्यों नहीं देखी थी? वाई टुडे? I think sometimes it takes time for people to really understand the full implication, run the numbers through their financial models and see कि भाई valuation पे क्या impact आएगा. और plus जिस तरह I think Lucky में particularly for example GDR का भी obviously है उनका plan which they have publicly announced. So उसका भी I think market में impact आएगा as the overall country situation settles down and the likelihood of a successful GDR offering by some of these companies becomes much clearer, तो उसका specific कुछ companies पे भी impact आएगा. Okay. But overall जी, given the जो global हम environment देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि कितना आसानी से जो GDRs की बात हो रही है, चाहे वो लकी सीमेंट के हों चाहे वो नेशनल बैंक के हों, वो प्लेस किए जा सकेंगे? और प्राइसिंग के हवाले से अगर बात मैं पूछूं तो आप क्या समझते हैं, अच्छी प्राइस मिल जाएगी? I think so, because जिस तरह नेशनल बैंक हो गया या लकी सीमेंट हो गया, they all have very strong equity stories, and certainly अभी भी बहुत liquidity है globally, and I don't think there should be a specific issue. Valuation पे कितना होता है, maybe कुछ थोड़ा बहुत हो impact, but it's too early to say anything about that, because that is really in the last
week or so in the final जब आप road shows पे जाते हैं तब market conditions will determine the valuation, if any valuation impact. फरूख, यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर की मूवमेंट देखें तो निशात मिल्स जो कि हम यूजुअली देखते हैं कि इलिक्विड स्क्रैप माना जाता है, लेकिन उसमें भी हम मूवमेंट देख रहे हैं। आसगार 9 दो कि इसकी स्टेक्स फर्टिलाइजर सेक्टर में है, लेकिन उसमें भी हम पिछले 2 दिनों से एक्टिविटी देख रहे हैं। आपके ख्याल में क्या रीजंस है? इस वक्त मैक्रो साइड पे अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर को बेइंतहा इस वक्त मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। आपके ख्याल में क्या रीजंस हो सकते हैं? I think इनमें different reasons हो सकते हैं. Obviously, Nishat Mills is a very well-known company in Pakistan, is also well-known to international investors. Or both Asgar and Nishat Mills are in the value-added textile sector. तो उनके margins relatively बेहतर हैं compared to just pure spinners. But also Nishat Mills particularly is also a portfolio holding company and has large investment portfolio in very, very attractive sectors. For example, in cement and banking, 2 of the major sectors of growth in the market. So, Nishat Mills trades not just on its textiles earnings, but also on the basis of its portfolio, obviously. And to some extent, it's similar with Asgard 9. Right. Okay. Thank you very much, Farrukh H. Khan, CEO of BME.